afternoon, children. Now we'll begin our science class. This class is for class 3. Okay, so everyone, take out the page number 96, chapter 11, from where we said we have finished this chapter, but I will revise it for you. Then we will go to the exercises. Okay. In last 2 days we learned कि एनर्जी क्या होता है ना, सोलर एनर्जी, व्हाट इज सोलर एनर्जी, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, अब और भी है ऐसे एनर्जीज, तो वो एनर्जीज क्या क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट इज, पहले हम एनर्जी के बारे में जानेंगे. ओके, वी विल रिवाइज व्हाट इज एनर्जी. ओके, what is this energy thing that we all need? So energy का मतलब हिंदी में we call it, what we call it ऊर्जा. Okay, in हिंदी में we call it ऊर्जा, and the definition in English is the ability to do work, any kind of work. Okay, the ability to do any kind of work. कोई भी काम करने की क्षमता अगर हम में है तो उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं ना. कोई भी ऊर्जा, ओके, ऊर्जा जो हमारे बॉडी के अंदर है, एनर्जी है कुछ काम करने का. ओके, कुछ करने का, दैट इज एनर्जी. इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क. ओके, एबिलिटी मीन्स वी कॉल इट क्षमता, राइट. इसको हम बोलते हैं क्षमता हिंदी में. ओके, कोई सा भी काम करने का क्षमता इज कॉल्ड द एनर्जी. ओके, इन बुक यू लर्न अबाउट द फ्यूल, फूड है ना. फूड इज फॉर आवर एनर्जी, वी गेट एनर्जी थ्रू द फूड वी ईट है ना, फ्यूल्स के बारे में. देन व्हाट वी लर्न अबाउट द सन, इट इज आवर नेचुरल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है ना. ओके, अबाउट द सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी हम किस किस में इस्तेमाल कर रहे थे है ना. अब वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ एनर्जी. अब ये एनर्जी का कितना टाइप होता है. ओके, इन बुक्स इट इज रिटन इन वेरी ब्रीफ, सो आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन. ओके, एनर्जी के बारे में हम जितना अच्छे से जानेंगे उतना ही फर्दर क्लासेस में आप लोगों को हेल्प होगा. ओके, ओके, यू विल गेट टू लर्न मोर, क्योंकि एनर्जी के बारे में एनर्जी सिर्फ 2 या 3 टाइप्स में लिमिटेड नहीं है, कई सारे एनर्जी है. वी नीड टू लर्न इट. ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टू टाइप्स ऑफ एनर्जी. ओके, टाइप्स ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी के कितने टाइप्स होते हैं है ना. सो नंबर 1 में, ओके, फर्स्ट में वी विल लर्न अबाउट द मैकेनिकल एनर्जी. ओके, व्हाट इज दैट? मैकेनिकल एनर्जी. ओके, मैकेनिकल एनर्जी. अब ये मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है? द एनर्जी ऑफ द मूवमेंट. ओके, कोई सा भी मूवमेंट करके जो हमें एनर्जी मिलता है, दैट इज व्हाट वी कॉल मैकेनिकल एनर्जी. द एनर्जी ऑफ द मूवमेंट. ओके, एनर्जी ऑफ द मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट करने से जो एनर्जी मिलता है. ओके,
child. Okay, running. Okay, running मतलब क्या हुआ? He or she is moving. उसका movement हो रहा है ना. He is a running child. It means a child is running. Then there is some kind of movement. कोई movement हो रहा है. Movement मतलब हिलडुलना. Okay, हमारा body का move होना. Okay, that is the mechanical energy. Suppose a moving bicycle. Okay, bicycle move हो रहा है. Okay, उसका movement हो रहा है. So that is mechanical energy. A flying bird or rolling ball. Okay, कोई सा भी things या living things या non living things जिसका movement हो रहा है. Okay, the energy of the movement. Okay, that is for what we call the mechanical energy of the movement. Okay, so जैसे electricity में energy of the electricity, वैसे ही mechanical energy का मतलब है energy of the movement. Okay, I hope you all are getting it. Okay, now second, अब ये हो गया mechanical energy, the energy of the movement. Now second is the heat energy. Okay, heat energy. Okay, अब heat का मतलब you already know. Okay, the heat जिससे गर्माहट आ रही from sun. Okay, the heat which is coming from sun, fire, okay, or hot water, any heating substances से जो heat आ रहा है, गर्माहट आ रहा है, that is the heat energy. ये याद रखना, the sun gives how many kinds of energy? 2 kinds of energy, heat और light देता है, right? तो sun का क्या है? Sun it is giving 2 kinds of energy. Sun gives us heat and light, है ना? तो heat और light energy भी होता है. Okay, तो sun is giving 2 kinds of energy, heat and light energy. तो एक example heat energy का क्या है? Sun, fire. Okay, fire is also giving us the heat or the hot water. Okay, now this is the example of the heat energy. The energy of the heat coming from sun, okay, fire or the hot water is called the heat energy. Okay, I hope you all are getting it. First one is called mechanical energy. Mechanical energy comes from the movement. Okay, energy of the movement. It is the energy of the movement. Example: running child, moving bicycle, flying bird, rolling ball. Okay. Then second one is heat energy. The energy which is coming from the sun, fire or the hot water. Okay. Now third is, as you are getting up, heat energy के बाद third is light energy. Okay. Okay, light energy. Okay. Now this light energy means which help us to see things. The energy which help us to see things. Okay, light मतलब उजाला, right? Which help us to, this energy help us to see things. Okay, light नहीं होगा तो हम लोग कुछ नहीं देख सकते, है ना? Help us to see things. Right? This energy help us to see things. अगर light नहीं होगा तो we cannot see anything. Okay, अभी now you can see the weather is completely fog, है ना? Fog है, चारों तरफ foggy है. But why it is still light? Because sun is there, लेकिन weather की वजह
में सन नहीं दिखाई दे रहा है, बट बिकॉज ऑफ द सन वी आर गेटिंग द लाइट. अगर सन नहीं होगा तो विल नाइदर गेट हीट नॉर लाइट. ओके, तो द एनर्जी विच हेल्प अस टू सी थिंग्स इज द लाइट एनर्जी. Okay, without light we cannot read, write or do anything. Okay, we are seeing colors. Okay, we are seeing different kinds of colors because of the light energy. Okay, example is sun. As I told you, heat and light क्या होता है? sun हो गया, bulb हो गया. Okay, electric bulb जो तुम्हारे घर में आता है, it also gives us light. Candles, okay, candle, torch, okay, these all are the examples of the light energy. Okay, sun we all know it gives us heat and light. Bulb हो गया, candle हो गया, torch हो गया, these are all the examples of the light energy. Okay, the energy which help us to see things. Okay, without the light energy we cannot read, we cannot write, we cannot do the simple daily to daily work that we do. Okay, so light is very important. Heat is also important as well as light is also important. Every kind of energy we should know and we should learn to understand. Okay, we have to try to understand what are those energy. Okay, now the third one is the chemical energy. Okay, I hope you all are getting it. Okay, first is mechanical energy, the energy of the movement, and the third one is the heat energy, the heat coming from the sun, okay, which gives us heat. Okay, okay, the third one is the energy which helps us to see things, the light energy. Now the fourth one is the chemical energy. और ये वो chemical नहीं है जो that you see in the factory. This is not that kind of chemical energy. Okay, chemical energy. Okay, that food, that energy which store the energy is also the energy which is stored in substances like food, fuel. Okay, okay, food, fuel, batteries. Okay, जो हम खाना खा रहे हैं. Okay, मैंने बोला था ना प्रीवियस टाइम कि खाने में हमारा क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है. तो वो एनर्जी क्या है, केमिकल एनर्जी. ओके, जो खाना हम खा रहे हैं उसमें क्या, कौन सा एनर्जी स्टोर है, केमिकल एनर्जी. वैसे ही फ्यूल को हम जैसे बर्न करते हैं तो वो कौन सा एनर्जी निकल रहा है, केमिकल एनर्जी. बैटरीज में जो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड है, ओके, दैट इज द केमिकल एनर्जी. उस केमिकल एनर्जी की वजह से वो चल रहा है. ओके, जो हम खाना खा रहे हैं वो खाने के अंदर कौन सा एनर्जी स्टोर्ड है, केमिकल एनर्जी. सो इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द सब्सटेंसेस. सब्सटेंसेस मतलब चीजें जिस लाइक फूड, ओके, फ्यूल. बैटरीज में जो एनर्जी स्टोर्ड है इट इज कॉल्ड द केमिकल एनर्जी. द फूड वी आर ईटिंग इट इज ऑल्सो द केमिकल एनर्जी. ओके, द फूड वी आर ईटिंग ऑल्सो द केमिकल एनर्जी बिकॉज उसमें क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है. उसी एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उसी स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी. ओके, ओके, अंडरस्टूड. नाउ केमिकल एनर्जी समझ गए, राइट. फूड में, फ्यूल में, बैटरीज में जो एनर्जी जो स्टोर होता है. ओके, फूड तो हमारे खाने से आता है बट फ्यूल क्या होता है, व्हेन इट इज बर्न और व्हेन इट इज यूज, उसको बर्न करके, है ना, लाइक इन कार व्हेन वी पुट ऑन द फ्यूल एंड वी स्टार्ट द इंजन, है ना, इंजन स्टार्ट होने के बाद वो बर्न होने लगता है. बर्न होने के बाद क्या निकलता है, केमिकल एनर्जी. ओके,
when we burn fuel, okay, फ्यूल के बारे में एक और इंटरेस्टिंग पार्ट जो है, जैसे हम इस फ्यूल को बर्न करते हैं, when we start to burn it, okay, जब ये बर्न होने लगता है, okay, जब हम इसको चलाते हैं तो ये बर्न होता है, तो केमिकल एनर्जी किस किस चीज में निकल रहा है, लाइट एंड हीट एनर्जी, ओके ओके ओके। जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो इट इज कन्वर्टिंग, इट इज चेंजिंग इनटू, ओके, इट इज चेंजिंग इनटू, इट इज चेंजिंग इनटू light and heat energy, okay, okay. Fuel, it comes under the chemical energy, and when we burn fuel, chemical energy is the fuel chemical energy is turning into light and heat energy, ठीक है। Now the next one is, fifth one is the solar energy. We all know the energy of the sun, है ना? Solar energy is the energy of the sun, है ना? Okay. Now solar energy is turned into, okay, कई सारी चीजों में इसको कन्वर्ट किया जाता है ना। फर्स्ट सोलर एनर्जी ऑलरेडी लाइटिंग हीट देता है, बट क्या सोलर पैनल्स क्या कर रहे हैं, इट इज चेंजिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आल्सो, राइट। ओके ओके, सोलर एनर्जी लाइट और हीट एनर्जी में भी होता है, वेराज इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे, सोलर सेल्स की वजह से, है ना। तो सोलर सेल्स क्या होता है, कनेक्ट करके सोलर पैनल बनता है, ओके, वो अब्सॉर्ब करके वो लाइट भी दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है, ओके, फ्रॉम द सोलर एनर्जी, ओके। नाउ you all understood solar energy is very easy, you all will get it nicely. Now the next one is number 6 is the sound energy, okay, what it is called, the sound energy, okay, sound, voice, when I am speaking, okay, my voice is traveling to you, तुम लोग सुन रहे हो, because of the sound energy, तुम्हारे कानों तक मेरा voice जा रहा है, because of the sound energy, because our voice is traveling, because my voice is traveling to your ears, okay, okay, that is because of the sound energy, okay, okay, the voice travels, okay, voice travels, okay, in this energy our voice travels to the other part, okay, जैसे आप तुम लोग बात कर रहे हो, है ना, फोन में तुम लोग एक दूसरे की आवाज क्यों सुनते हो, बिकॉज ऑफ द साउंड एनर्जी, है ना, ओके, एग्जाम्पल क्या क्या है, क्या क्या है, साउंड एनर्जी का वेरी इज सिंगिंग, टॉकिंग, ओके, और लिसनिंग म्यूजिक, ओके, टॉकिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, है ना, तो ये सब क्या है, साउंड एनर्जी, ओके, जिसमें क्या है, ओके, जिसमें अपना वॉइस एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल हो रहा है, दैट इज द साउंड एनर्जी, ओके। Okay, and the last one is the electrical energy. Okay, the last one is last number 7 is the
इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो लोगों को पता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हैव ऑलरेडी लर्न इट ना, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करता है? इट रन्स मशीन्स, है ना, हमारे फोन्स भी इसी से होते हैं, है ना, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, व्हाटएवर इट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ही दैट वर्क्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो दीज आर द 7 टाइप्स ऑफ एनर्जी दैट वी हैव टू लर्न। ओके, राइट, first one is the mechanical energy, the energy of the movement, running child, moving bicycle, flying bird, rolling ball, any kind of movement if it is happening, it is the mechanical energy। कोई सा भी movement हो रहा हो, it is we call the mechanical energy। second one is the heat energy, the heat energy which the energy which comes from the sun, fire, hot water, okay, जो हमें गर्माहट दे रहा है, that is the heat energy, है ना। then light energy, the energy which helps us to see the things around us, है ना, without light we cannot read, write or do any kind of things, because of the light energy we are seeing the colors, okay, you are seeing this white color, blue color, red color, it is all because of the light energy, okay। then chemical energy, the stored energy, the energy which is stored in substances like food, fuel, batteries, okay, so these are the examples of the chemical energy। next one is the solar energy, the energy of the sun which is converting into light energy, heat energy, electrical energy, okay, so sun is the our natural resource, okay, it is our natural resource, okay। then the last two are sound energy, the voice which is traveling through your ears, to your ears because of the sound energy, okay, and example is singing, talking, listening music, any, okay। and the 7 is the electrical energy, the energy of the electricity। so these are the 7 types of energy that we have been studying today, okay। tomorrow I will revise it even betterly, okay। now let's move on to the exercises, okay। now let's do the exercises that I have given you, fill in the blanks जो मैंने दिया था उसका एग्जाम्पल हम करेंगे, okay। okay, in first one, okay, page number is 101 only, right? okay, now see the exercises, the energy stored in food is given out when food combines with oxygen, okay। number 1 is the oxygen। हमारे बॉडी में क्या होता है? हमारे बॉडी में ऑक्सीजन होता है, तो एनर्जी हमें कहाँ से मिल रहा है? जब ऑक्सीजन और फूड कंबाइन होता है, मिक्स होता है, तब हमें एनर्जी मिलता है, राइट। थिंग्स वी बर्न टू गेट एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल ना, और something we burn to get energy is are called fuels। number 2 you write down fuels, okay। number 3 the energy stored in food comes from dash energy, the energy stored in food comes from solar energy, okay। chemical energy भी होता है, but in the book it is the solar energy, so number 3 you write down the solar energy, okay।
Okay, the energy stored in food comes from the solar energy. Number 4 is the solar energy is used to cook food in solar cookers, right? Number 4 का क्या है? Solar energy is used to cook food in solar cookers. Okay? सोलर कुकर में हम लोग क्या बना रहे हैं? खाना बना रहे हैं, है ना? ओके। The energy stored in battery changes into dash when is used into work or toy, phone, etc. Energy stored in battery changes into electrical energy. Understood. Now these are the answers for your fill in the blanks. If you haven't done it, please follow. Okay. Oxygen, fuel, solar. Okay. These are the answers for your fill in the blanks. वो सब करो. Okay. Question answer we will do when your classes will be resumed. हम लोग offline में ही करेंगे question answers because तुम लोग कई लोग कर सकते हो, है ना? कई लोग you might getting the disturbance also. Okay. Network issue भी हो सकता है. So question answer we will do in classes, and now until then just do the fill in the blanks, true or false. Okay. Okay. फिर हम लोग almost ये chapter complete कर चुके हैं. Okay. Tomorrow I will do one more exercise. Then we will revise some chapters. Okay. क्योंकि already सारे chapters खत्म almost हो चुके हैं. Okay. Okay, now this much for today. Okay, now I'll meet you tomorrow and we'll do some exercises. Okay, have a nice day. Bye children. That's wrong. Children, just write your homework, okay? Science homework, English, right? Page 112. Okay, making connections, page 102. Okay. जिसमें पेट्रोलियम गिव्स अस मेनी यूजफुल थिंग. पेट्रोलियम के बारे में जो जो दिया है, ओके, चूज फ्रॉम केरोसिन, पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस. ओके, वो तुम लोग ट्राई करो. इफ यू डिडंट गेट द आंसर्स आई विल गिव यू टुमारो. ओके, ये तुम लोग ट्राई कर सकते हो. और ऊपर में जो है मेक अ चार्ट, पेज नंबर 102 में. ओके, पेज नंबर 102 में make a chart to show the energy stored in food comes from solar energy. You can cut out old pictures and from old newspapers. Okay, you can do this as well. Okay, okay, this much.
Good afternoon, everyone. So, as you know me, I'm your English teacher. So, all of you be ready with English subject as well as your notebook. Okay. So, today we are going to learn second part of speech. Okay. That is pronoun. Yes, good afternoon, Roshni. Good afternoon. Yes, Nidhi. Good afternoon. Roshni. Good afternoon. Okay. Before going to this topic, I'm going to give a short conversations with Kunju ma'am and help to understand better what is pronoun. If there is no pronoun in this world, what will happen? Okay. So in this topic, we are going to give a short conversation. Okay. So all of you, let's be ready. Kunju ma'am, please come. So, कुंजू मैम, आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम कुंजू है। कुंजू। कुंजू आप कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं? मैं अभी सेंट जोसेफ एकेडमी में पढ़ा रही हूँ। ओके। कुंजू आपका फेवरेट फ्रूट क्या है? माय फेवरेट फ्रूट इज मैंगो। कुंजू आप कहाँ रहते हैं? एक सेकेंड, आप बार बार मुझे बोलना जरूरी है। ओके। मैं यहीं पर खड़ी हूँ, आप ये बार बार नाम बुलाना, आई डोंट थिंक इट्स लाइक वर्थ इट। ओके। कुंजू आप कहाँ हो रहते गया हो? आपका मैम, बार प्लीज मेरा नाम मत बुलाइए। अब मैं इधर ही खड़ी हूँ ना, आप मुझे बार बार मेरा नाम बुलाना है, ये आप मत कीजिए। आप पागल करते नहीं मुझे, छोड़िए, आप ले जा रहे हैं। So, यहाँ पे क्या हुआ था अभी? Okay, thank you Kunju ma'am for your interruption here. So, we are going to discuss about it. ना अभी यहाँ के क्या इंट्रोडक्शन हुआ मैम का? हम लोग के साथ क्या इंट्रोडक्शन हुआ मेरे साथ? कि मैम ने क्या, मैंने क्या क्वेश्चन किया? कि कुंजू मैम है ना? Again क्या हो रहा था? Again कुंजू मैम, okay? कुंजू मैम बार कुंजू मैम आ रहा था ना? So, आपको सुनने में अच्छा लगा? सबसे पहले मुझे बताइए, अच्छा लगा सुनने में? कुंजू मैम also got tired. Why are you asking my name again and again? Yes? It's good afternoon everyone. Okay. So, यहाँ पे
Good afternoon, everyone. Good afternoon. Okay. नीली क्लास में भी आप इतना ही हल्ला करते हुए और as well as ऑनलाइन क्लासेस में भी बात स्टार्ट. Let's focus the today's topic. Okay. So I'm going to write the pronoun definition. Okay. Pronoun are the words. सबको पता है ना, सबको पता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं. Pronouns are the words used in place of a noun. ना, they are used in place of a noun. Noun की जगह में लगने वाला pronoun. ना, ये क्या है हमारे? क्या है? Pronoun. क्या है? Pronoun. Okay? Example. I, we, you, he, she, they. Okay. He, she, it, etc. Okay. So look at this definition. Pronoun are the words used in place of a noun. Pronoun एक ऐसा word है, ऐसा शब्द है जैसे कि I, जैसे कि we, ना, जैसे कि you, ना, used in place of a noun. ना, noun की जगह में, नाम की जगह में लगने वाला क्या है हमारे? Pronoun है. क्या है? Pronoun है. All of you understand? समझ में आया? Next. ना, next. Okay. We have the types. We have the types of pronoun. First, let's go to the examples. Okay. We have got examples of pronoun clearly. Okay. Did you revise the noun kinds of noun? Proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun. Did you revise in your home? First of all, you can tell me. Yes, you have to write in your copy. ना कॉपी में लिखना है. जितने भी नोट्स यहाँ पे लिखा रही हूँ समझने के लिए आपको कॉपी में लिखना है. Okay. After the online classes is over, you have to show me in the class. Okay. Yes, Ajit. Yes, Arabika. Good afternoon. Why coming too late? Oh, इतना लेट क्यों आए आप लोग? अभी मैंने मैम के साथ एक कन्वर्सेशन शेयर किया था. Yes, Anushka. Okay, okay. Okay. Examples. Examples. Ram is a boy. Okay. Ram is a boy. Meena and Sam are best friends. Okay. Now tell me what is the pronoun used instead of a noun? Ram. Okay, Ram is a boy. Did you know that Ram is a noun? Okay, could you tell me what is the pronoun of using Ram instead of using Ram? Give me the answer. Okay, very good. Okay. Kunju ma'am is funny. Okay. From this short script, what did you learn? क्या समझा आपने इस शॉर्ट स्क्रिप्ट में? आपने समझा ना कितना मतलब मुश्किल होता है जब कोई किसी का कन्वर्सेशन में भी है ना, जब आप बातचीत करते हो, दूसरे के साथ बात करना है ना, बात करते हो, तब एकदम उसी का नाम बार बार रिपीट लेते सुनने में अच्छा लग रहा
Ram and Shyam. राम एंड श्याम, इसका प्रनाम क्या क्या होगा बताइए मुझे। यस खुशबू, गिव मी द आंसर। राम एंड श्याम का प्रनाम क्या होगा? नो, मीना एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे क्या हुआ? एक ही सेंटेंस में आ रहे मीना और श्याम आर बेस्ट फ्रेंड। अब इसका तो हम सिंगल सिंगल नहीं कर सकते ना, मीना, शी, श्याम, ही, इसको नहीं कर सकते ना। अब सिंगल सिंगल लिया तो हमने इज इट राइट आंसर है ना, श्याम का ही होगा, मीना का शी होगा। बट यहाँ पे मैं क्या टुगेदर, जब दोनों साथ में होता है तो गुड सोनी, सोनी कुमारी वेरी गुड, वेरी गुड, आरव वेरी गुड, दे क्या होगा? दे, ओके, दे आर बेस्ट फ्रेंड, क्या होगा? दे आर बेस्ट फ्रेंड। दिस ऑल आर जस्ट एग्जांपल, लेट्स गो टू द पास्ट, ओके। ये सबको पता है, अंडरस्टैंड? ये सबको पता है, इसमें इतना सारा नहीं होना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, ओके टाइप्स। फर्स्ट मैंने लिखा ना एग्जांपल, जब मैंने ये एग्जांपल लिखा ना, I, we, you, they, she, he, it, okay. So I यानी कि मैं ना, मैं, मुझे ना, नहीं तो बोलते ना जब आप आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, मैं, मुझे ना, मेरा, ओके, मेरा, वी, वी का क्या होगा? हम, ओके, हम, नेक्स्ट, हमें, हमारा, यू का क्या होगा? तुम ना, तुम, just wait, students. मैं, मुझे, मेरा, ओके। वे, हम, जब हम आते हैं ना, जब कोई भी वर्ड हमें आते हैं ना, यानी कि हमारा ना, हमारा आते हैं, then we use we, ओके। you, जब तुम आते हो ना, तुम ना, तुम है, ओके, तुम है, तुम है, then तुम्हारा, तुम्हारा, उसमें हम क्या करेंगे? We use they,
क्लास में तुम ना, तुम बोले तो सिर्फ तुम अकेला अकेला बोलते हैं ना, बट नॉट ना, अकेला भी होते हैं लेकिन ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना। तो आप लोग सुन रहे हो ना मेरी बात, आप लोग सुन रहे हो, तो आप लोग सिर्फ एक नहीं है ना क्लास में, ना ही रोशनी है ना, पूरा है ना, रोशनी, आरव है ना, क्रिश्चियन साथ बहुत सारा है, तो ज्यादा नहीं हुआ, एक से ज्यादा नहीं हुआ, एक से ज्यादा है ना, तो यू क्या होगा, यू क्या होगा, सेकंड पर्सन। ओके, तो जब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं तो ऑलवेज प्लूरल में काउंट किया जाता है, प्लूरल होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, दे, शी, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, आप लोग सुन रहे हो है ना, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग सेकंड पर्सन हुआ। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रोनाउन के बारे में ना, प्रोनाउन के बारे में ना, या फिर हम लोग किसी भी जानवर के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर किसी इंसान के नेक्स्ट क्लासेस 2 क्लास के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो 2 क्लास क्या हुआ हमारे थर्ड पर्सन।